Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to solve one more numerical on fund flow statement, and this will be the advanced question, and we will discuss in both the language Hindi and English. And if you are an initial learner, you can be a part with us, learn how to solve these numerical, how to deal with additional information. And if you are an experienced learner, you already have a good knowledge about the fund flow statement, you did some numerical, you can take this session as a challenge for you and try to solve this question and cross check with the end of the session. You can also take a benefit of time support, like many of these students give their reviews that they are taking a benefit to improve their speed to solve these kind of numerical. You can do also to improve your speed or anything else you are taking benefit. Do share with us so that we can share with maximum and so that we all together take a maximum benefit from the knowledge. तो आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप एक नए लर्नर हैं, एक नए इनिशियल लर्नर हैं, तो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आपने थ्योरी पे बेसिक कमांड कर ली होगी। ठीक है, अगर आपने क्लासेस लिए हैं तो आपको वहाँ पे थ्योरी जो कवर आप कराई है आपने उसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने जो है थ्योरी समझ ली तो इन सेशंस के थ्रू आप को आइडिया मिल पाएगा कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप यहाँ से एक चैलेंजेस ले सकते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आप उसे मेरे से पहले सॉल्व करके उसे तुरंत सेशन के एंड तक क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बेनिफिट उठा रहे हैं इन सेशंस के थ्रू कि वो कम से कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके ताकि एग्जाम जो मेन मैराथन है वहाँ पे आपको विजय हासिल हो। तो आप कम से कम समय लगाएं, उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर कोई अन्य बेनिफिट, कोई और बेनिफिट आप उठा रहे हैं ना, तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है तो अगर वॉइस आपको डबल लगेगी तो आई एम वेरी सॉरी। आई ट्राई कि आपको जो है जो सेशन है मैक्सिमम सपोर्टिव हो और मैक्सिमम यूज मिले उसका। ठीक है, सो आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लियर। बैलेंस शीट है हमारे सामने फंड फ्लो स्टेटमेंट की। सो वी हैव बोथ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लायबिलिटीज एंड एसेट्स. We have equity share capital of 2 years 2021 and 2022. So it is very important for a aspirant or a student to understand because they are in rush while solving the question. So it is very important to take care that you have, this is a previous year and have a current year. So there is a no rule of thumb with the fund flow statement that you will get first as a previous year or second as a current year. So please be cautious and be focused which year is given ahead. Okay, so it can be any year. So in our question it is 2021 and 2022. We have equity share capital, security premium or a share premium, general reserve, debenture redemption reserve, debenture, provision for taxation, secured loan and current liabilities respectively. We have on the asset side buildings, plant and machinery, furniture, cash in hand, stock, debtors, bill receivable and investments which are long term. Again, I want to request you, I have a little bit health issue today, but I'll try to help you the most. Still, if anything bother you won't able to understand any word, you can ask in the comment section. Okay, so we have additional information with us. The point number A is, during the year 2022, the company paid 12% dividend. Sorry, the company paid 12% dividend. Okay, so we have this information that company has paid the 12% dividend on its equity share capital of rupees 4 lakh. So only on the rupees of 4 lakh company decided to pay a dividend of rupees 12%. B is a share value is rupees 100 days as a fully paid up. So this is not a much bigger detailed information with us. C is there is a taxation provision which was utilized to the extent of 30,000 for the income tax payment in the year 2022. That means it is related to the current year. D. Depreciation was charged on building at 5%. On plant and machinery we have 10%. On furniture we have 10% for full 1 year. E. A building worth rupees 70,000 was sold on 1st January 2022 at rupees 60,000. Means the cost is 70,000 and sold for 60,000. Then we have a verbally we have a loss information so far. Let's see the
depreciation thing. And a new building was constructed at a value of rupees 25,000 on 31st December 2022. A machine was purchased at a cost of 40,000 on 1st January 2022, while a machine having a book value of 10,000 was sold on 1st July at 20,000. So prepare a statement showing in a working capital, profit and loss appropriation, and a statement of source and application. So you are required as a part of solution three things: your working capital statement, your P&L appropriation, and statement showing source and fund. So now the P&L appropriation is a part of your main answer, not as a working capital, because it's a demand of question. Okay, so kindly give me a quick moment to conclude in other language, and if you are an experienced learner, your challenges is start now, try to solve and cross checked. फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट है, रिस्पेक्टिवली लायबिलिटीज और एसेट साइड के हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है. आपके सामने स्क्रीन में वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है, आप उन्हें देख सकते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर की गई है हमारे पास. 2022 में जो है कंपनी ने डिविडेंड पे करने का डिसाइड किया है 12% इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी 4 लाख वैल्यू है. कंपनी ने ये बताया है कि जो शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपये ईच है, फुली पेड अप है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, जहाँ पे जो टैक्सेशन का प्रोविजन है उसमें 30,000 रुपये तक का इनकम टैक्स पे किया गया है 2022 का. ठीक है, उसके बाद जो है हमारे को जो है बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन मिलेगा 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 10% है पूरे 1 साल का. बिल्डिंग और मशीन पे अदर इन्फॉर्मेशन सेल और कंस्ट्रक्शन की दी गई है. और आपको जो है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाना है. ये तीनों मेन आपके आंसर के पार्ट होंगे, और बाकी जो भी लेजर्स हम क्रिएट करेंगे वो हमारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट होंगे. तो चलिए अब ज़्यादा समय हम नहीं लगा के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. Okay, so without giving a much time on the part of discussion, let's move ahead with the solution. So we have to start the solution with the statement on working capital. So there is a fixed formula on this format, and I hope you already referred the past session which we have already discussed on fund flow statement. So it will help you to recall those format. So this is a fixed format for the statement showing changes in working capital. So first, working capital is the current asset minus current liability. So we will first write down the current asset. Okay, so let's check what the current asset, do we have any kind of additional information related to current asset? First check that. So first is related to the dividend. Second is not much relevant for current asset. Then we have a taxation provision. Then we have a depreciation, and then we have a building and machine. So nothing is related to the current asset in the additional information. So okay, now jump to the balance sheet and take out the current asset items. So cash in hand 5,000 and 8,000. So first I will write down, we will write down together, and then we will discuss increase or decrease. Stock we have 1,55,000 and 1,45,000. Okay. Then we have a debtors of 1,80,000 and 1,60,000. Okay, and then we have a bill receivable 4,000 and 40,000.
So the investment we are not going to take because it's mentioned specifically in the balance sheet that it is related to the long term. Okay, so we'll do the sum up and we'll also discuss the increase. So for your current assets, first cash in and it's been increasing from 5,000 to 8,000. That means cash is increased. That means you put some fund in there. From 5,000 it increases to 8,000. It is an increase. It's my humble request, because a humble request is that please never think to memorize in the case of management of the fund or anything. In commerce and accountancy is all about the money, and money will flow to your entire life. So you cannot memorize the thing. It's very very important to understand. So if you facing any kind of problem in understanding, what I want you to do is think like a company, think like a person dealing in the question. So in this case, think like this is your statement. So if it increases your cash, earlier last year it was 5,000 and this year it was 8,000, that means you put extra 3,000. That means your working capital is increased by 3,000. Hope you are getting, and it's my humble request, never think to memorize anything here. You did in past, that was I was not there, but from today stop doing that. So we have a stock from 1,55,000 to 1,45,000. So we can see that decrease. Like last year your working capital was blocked with 1,55,000, but current year it reduced. So your requirement is also reduced by rupees 10,000. Next we have a debtor, and this we can also see as reduced. Now I hope you people can understood. Never memorize, okay? Never ever think to memorize. Try to understand every point. Bill receivable increased by 36,000. Can you do the total of current asset? Total of this complete current asset? It will be 3,44,000, 3,53,000. Okay. Then we have current liabilities. Okay, so whatever the item we have currently here, so check the current liabilities. Before going to do with the current liability, there is a provision for taxation. I would like to discuss something about it, and the dividend. We are not going to take them as a current liability. In the last session, which was very important session, in which I taught you about what will be the solution if we take these two items as a current asset, or what will be the solution if we take these two items as a appropriation of profits. If you didn't refer those last two sessions, it's my humble request to watch it, because the things I already taught in the last session I'm not going to repeat in the future sessions. Okay, so we are not going to take him as a current liability. So let's see what the else we have as a current liability. So we have nothing other than provision and taxation. We have nothing information related to the current liability, right? So go with the other item. We have straight away the broadhead in our balance sheet as a current liability, which is 24,000, I think, yes, and 30,000. 24,000 and 30,000. Do we have some other information? No, we don't have, because provision for taxation is not, we are not taking as a current liability, and secured loan are not related to the current liability. So we can see it increases from 24,000 to 30,000. It increases. That means your fund actually not moved. Means in the last year you have outstanding amount was 24,000 to pay, but this year it increases to 30. That means you have to pay, but some in future date, not today. Not today. Means this time what is happening is your fund is reduced. So it is reduction. It is reduction or decrease by amount rupees 6,000. Please never think to memorize. It's my humble request. We'll do the total. Okay. If we have a one item also, then we have to for the good presentation do the total. Okay. So let's calculate the working capital. Working capital. So 1 minus 2, that's why I put the number to make the things very easy. So 3,44,000 minus 24,000, we will get 3,20,000, and 3,53 minus 30, so 3,23,000.
So we can see our working requirement has been increased from 3 lakh 20 to 3 lakh 23. So increase, we can see that simply it is visible from, okay. So net increase in working capital by 3000. Okay. 39, 39. Okay, satisfied? Okay, so kindly give me a moment quickly to conclude in other language. Okay, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. कहीं भी मिस्टेक नहीं हो तो सबसे पहले देख लेना भाई ये वर्किंग कैपिटल में हमें दो चीज़ चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी. तो पहले देख लेना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है. ठीक है, तो हमने देखा दो इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स दूसरा डिविडेंड. हम प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड को करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे. हमने लास्ट दो सेशंस में आपको यही मेन पॉइंट समझाने में वो सेशंस को कवर अप किया था कि कब जब हम इसे करंट एसेट मानते हैं या करंट लायबिलिटी मानते हैं तो कैसे डील करते हैं, और जब जो है हम इसे एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट मानते हैं तो हम कैसे डील करते हैं. अगर वो दोनों सेशन आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो ऑलरेडी पास्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप किए जा चुके हैं उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज फिर आपके लिए अननेसेसरी सेशंस लेंदी होते जाएंगे. ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड को नहीं ले रहे करंट लायबिलिटी. और करंट एसेट हमारे पास क्या आइटम है, कैश इन हैंड है, आप देख सकते हैं, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल. इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफिकली मेंशन है. और लायबिलिटी साइड में सिर्फ करंट लायबिलिटी बचता है. ठीक है, तो सारे डिटेल हम एज अ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में लिख देंगे. नंबर 1 एंड नंबर 2 डिनोट किया है ताकि जो है कैलकुलेशन इजी हो जाए, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे. ठीक है, तो हमने 21 एंड 22 के रिस्पेक्टिव डिटेल्स फीड किए हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैश इन हैंड जो है वो 5000 से बढ़ के 8000 हो गया. ये सारी चीज़ें कई बार मैंने स्टूडेंट्स का जब इंटरव्यू लिया है तो मैंने ये भी देखा है कि वो याद करके आते हैं और वो इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो मैं आपको चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जो न्यूमेरिकल पेपर है अब तक आपने कोई भी चीज़ याद करने की आदत डाली है ना, तो उसे अब आप छोड़ देंगे. आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये मनी रिलेटेड मैटर है. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फील्ड के आप हैं तो पैसों से आपको एंजॉय करने आना चाहिए. तो अंडरस्टैंड करेंगे सारे ट्रांजैक्शंस को, याद नहीं करेंगे, अब तक करते थे तो उसे छोड़ देंगे. ठीक है, तो आपने देखा कि भाई पिछली बार जो था मेरे जेब में 5000 रुपये थे, अभी 8000 हो गए, यानी आपने फंड और डाला है ना, तभी तो बढ़ गया. तो 3000 आपका इंक्रीज हो गया. ऐसे रिस्पेक्टिवली सारे करंट एसेट में आप चेक कर लेंगे. करंट लायबिलिटी यानी पिछली बार हमारा जो था ना कि 24,000 रुपये बकाया रह रहा था कि मुझे पे करना है. मैंने कहा ठीक है यार अभी नहीं पे करेंगे, आगे चल के पे करेंगे. इस साल बढ़ गया बकाया 30,000, यानी अभी भी मैंने पे नहीं किया, 6,000 से बढ़ गया है बकाया. तो आने वाले टाइम में आएगा. तो क्या हुआ, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी फंड को रिड्यूस्ड किया ना 6,000 से. ठीक है, क्योंकि फंड जाने नहीं दिया, मैंने फंड को रोक के रखा है. मैंने कहा कि फ्यूचर में पे कर देंगे, ये लायबिलिटी फ्यूचर में निकाली जाएगी. ठीक है, तो फंड बच गया. तो आप देख लेंगे टोटल आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का कर लेना है. डिफरेंस आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 1 - 2. और आप देख सकते हैं 3,20,000 से 3,23,000 हुआ, यानी इंक्रीज हो रहा है आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट. क्लियर है, कोई डाउट नहीं. चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट्स बिकॉज की क्वेश्चन की डिमांड है कि इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. ओके, adjusted profit and loss account. Why we are preparing this? Because the question is specifically demanded for the preparation of adjusted P&L account for the purpose of solution. Okay, presentation need to be very clear, and I receive a good response from the student that they are challenging to improve their speech also. So you can also do that. Once you learn with this session, try to do as much as fast as you can, because after understanding there is a challenge of speed. Okay, so we dealt with few items which is not to be again taken care. So profit and loss appropriation account. So it is a, we need to check the profit and loss statement. Do we have a P&L? No, we don't have a P&L, but we have a general reserve with us.
So we will take general reserve. It increases from 2 lakh to 2,20,000. So if we have a PNL, we will take the PNL and we'll show the difference of general reserve. If we don't have a PNL, we will take the general reserve. Okay. By balance brought down, I'm writing here the general reserve. Okay. We have 2 lakh rupees as your balance, and 2 balance carried down. Again we have a 2,20,000. Okay. So what else we have? We dealt with the general reserve, right? We dealt with the general reserve. So I will what we do on being on a safe side, we will prepare the balance sheet also, or a statement of source and fund. Statement of, leave some space and then do. Sources, one second please. Application. Okay. So we will take each and every item. First we'll try to solve our adjustments one by one. Okay. So we have a provision for taxation. So let's prepare a working note. So first we are going to prepare the provision for taxation. Okay. Date is not required, so we just straight away prepare the particulars and amount column. Yes, it is very important to prepare the format carefully because it's put a good impression on the examiner. So we have a provision for taxation in our balance sheet, 40,000 and 35,000 as an opening and closing balance. So please transfer these amount 40,000 and 35,000 by balance brought down 40,000 to balance carried down 35,000. Okay, so let's move ahead. Do we have any other information in the balance sheet? No. So we dealt with the provision for taxation, and now just switch to the point number C. Provision taxation was utilized to the extent of 30,000. That means it's saying that the taxation provision, out of those provision, 30,000 is used for the payment of tax. Okay, so payment of tax, how much amount? 30,000. When you pay, what you are doing, you are putting your money out, cash or bank, whatever. Okay, so provision for tax or tax paid to bank, your bank is going. Okay, so in the provision for taxation ledger, you can do that to cash or bank being tax paid, right? You paid the tax by 30,000. Hope you people satisfy. If you are not able to understand any point, try to work on that, or if still you are facing any issue, try to ask in a comment section. But I want you people to understand, don't memorize, don't you think ever to memorize here. Okay, and difference will be the profit and loss account. What will be the difference? Please tell me. 65,000 we have, then left with the 25,000, right? So we can take it as a provision balancing figure 25,000. Hope you people satisfied.
ओके, सो काइंडली गिव मी अ क्विक मोमेंट आई टू कंक्लूड इट. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और पीनल एप्रोप्रिएशन साइमल्टेनियसली बनाएंगे और वर्किंग नोट भी बनाते जाएंगे. इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी कोई भी चीज़ मिस होने के चांसेस जो हैं नेलिजिबल हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देख लेते हैं. डिविडेंड भी देख सकते थे बट हम चलिए टैक्सेशन देख लेते हैं. उसका लेजर बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का. ठीक है. तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का लेजर में ट्रांसफर कर दिया. फॉर्मेट आपको बनाना है. ये एक राइट प्रेजेंटेशन होता है और एग्जामिनर इसको बहुत ही कीन कंसर्न से देखते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ये मेंशन है कि भाई जो टैक्सेशन का प्रोविजन है उसमें से 30,000 रुपये तक यूटिलाइज किया गया टैक्स पेमेंट का 2022 में. तो आपने जो टैक्स पे कर रहे हो तो क्या एंट्री पास कर दो. पे कर रहे हो जेब से जा रहा है ना आपने कंपनी या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको खुद अंडरस्टैंड जेब से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया अगेंस्ट किसके टैक्स पेमेंट के. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैंक और कैश. जनरल एंट्री में टू कैश बैंक आ गया 30,000 रुपये. डिफरेंस फिगर आपका प्रोविजन हो जाएगा पीनल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा. कितना बच रहा है 25,000. इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. डू यू एग्री विथ मी. सो लेट ट्रांसफर्ड योर 25,000 पीएनएल appropriation account to your P&L appropriation account. To provision for tax. How much the amount we had? 25,000. Okay. And payment of tax will be application 30,000. Hope you people agree. Okay. We will also transfer net increase in working capital. If there is an increase, that means we put some fund there, so it is a application. So net increase in working capital, I write shortcut, please avoid by rupees 3,000. Satisfied? Okay. Okay, so we have a let's prepare together with the building machinery, plant and machinery and building account because these include a lot of entry. So then we will do other items. Building account. You can prepare anything. There is no hard and fast rule. Don't worry. Okay. So debit and credit we have. Kindly bring down this your information of building. 5,70,000 and 5 lakh we have. 5,70,000 and 5 lakh. To balance. Carried down. 5,70,000 by balance. Brought down. 5 lakh. Okay. Okay, now check what are the additional information. So we did with the balance sheet, so market checked. So we have a depreciation on building of 5%. So there is a 5% depreciation on building. So on 5,70,000. Okay. So what we have to do is to provide a depreciation during the current year because it's mentioned for the first year. So we have to calculate depreciation on 5 lakh. Why? Because this is a opening balance and this is a closing balance which stand and there is some sale on building we can see and there is some construction also we can see. Point number E, 70,000, or you can pass this thing and then prepare a charge a depreciation. You can do anything you as you like. Okay, so for the building you need to charge a depreciation of 5% on 5 lakh. By depreciation. How much it will be? 25,000. Okay, 25
thousand. Please transfer it to profit and loss appropriation account simultaneously because otherwise you will miss it. To depreciation on building. How much? 25,000. Clear? Okay. Then we have a building worth rupees 70,000 was sold on 1st January. Look, so when you charge the depreciation at the year end, but on 1st January sold for 70,000. That's why I asked you to charge the depreciation on 5 lakh because your opening balance was 5 lakh. Anything in between the year, buy or sale will be adjusted, and at the end, you have to charge the depreciation at the end of the year. So I hope you people not been confused that why we did this. Okay. So 70,000 machinery was sold for rupees 60,000. So we sold that machinery. Oh, sorry, building. And there is a loss on sale. So first we'll charge by cash. It's because 70,000 machinery was sold for 60,000 and there is a loss on sale. Loss on sale. How much? 10 rupee, 10,000. Not, no, there is nothing more to explain here. 70,000 was sold for 60,000 and there is a new building construction of rupees 25,000. New building construction is of 25,000 to cash. 25,000. Please do the total. We have 5,95,000 straight away here. Cross tally? Okay. Not to hurry. Close this ledger first. Okay. Transfer every item to the respective ledgers and first transfer your cash sale. That means a source of fund 60,000. How much? 60,000 and building constructed for rupees 25,000. How much? 25,000. Clear? Transfer your loss because we charge the depreciation, we show the cash sale, we show the cash purchase. Now loss on sale 10,000. Loss on sale 10,000. Hope you people satisfied. ओके सो काइंडली गिव मी अ क्विक मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा बिल्डिंग अकाउंट. कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में बनाना है. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने ट्रांसफर कर लेना है. ठीक है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की डेप्रिसिएशन जब भी लगता है वो ओपनिंग प्लस सेल या परचेज कुछ भी पूरे साल के दौरान हो रहा है उसके बाद जो WDV आता है यानी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ठीक है. तो पॉइंट नंबर डी में तो डेप्रिसिएशन बता दिया गया कि 5% लगेगा, लेकिन पॉइंट नंबर ई में आपको बताया कि जो 70,000 की बिल्डिंग थी उसे 60,000 में बेचा गया और एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है 25,000 की. और ये दोनों काम ना साल के एंड में मिड में हुए हैं. एक तो 1 जनवरी 2022 में और दूसरा दिसंबर में हुआ है. ठीक है. तो अब आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? जो आपकी ओपनिंग बैलेंस थी 5,70,000 उस पे आपने सेल को हटाना है क्योंकि वो 1 जनवरी 2022 का है. उसके बाद डेप्रिसिएशन लग रहेगा और उसके बाद जो है आपने परचेज की है बिल्डिंग को. ठीक है. तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन 5,70,000 में से 70,000 हटा देंगे क्योंकि 1 जनवरी को ही सेल हो गया है. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 5 लाख के ऊपर 5%, तो 25,000 आ जाएगा. ये डेप्रिसिएशन आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. हो गया. उसके बाद 70,000 की जो बिल्डिंग है वो उसे 60,000 में बेचा गया है. तो जब आप बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग चली गई तो बाई कैश अकाउंट सेल आपने 60,000 दिखाया. लॉस हो जाता है आपको 10,000. कैसे लॉस हुआ? क्योंकि 70,000 की वैल्यू थी और 60,000 में बेचा तो डिफरेंस कितना है? 10,000. वो 10,000 आपका लॉस है. उसके बाद 25,000 की कंस्ट्रक्शन हुई है. आप ऐसे लेजर को क्लोज कर लेंगे और सारे आइटम को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे ट्रांसफर करेंगे. डेप्रिसिएशन को P&L एप्रोप्रिएशन में,
कैश सेल, तो जब आपने कैश में सेल किया तो सोर्स ऑफ फंड आया ना आपके पास, तो कैश सेल को हम सोर्स में ट्रांसफर कर देंगे 60,000। जो लॉस आया था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है सेल। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी 25,000 की, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ ना फंड का, तो उसे फंड में ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन साइड। ठीक है, 25,000 रुपए। क्लियर है? तो बिल्डिंग, अब यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है बिल्डिंग की। बढ़ते हैं हम फर्नीचर की ओर, क्योंकि फर्नीचर में भी हमें डेप्रिसिएशन मिला है। फर्नीचर अकाउंट। So to hurry up, I'll just use the shortcut language, but it's my humble request, avoid an examination, okay? So, okay, we have a furniture detail. Let's see what the information we have. Furniture we have 90,000 and 81,000. 90, 90 and 81,000. To balance, carried down 90,000. To balance, brought down 81,000. Okay, so this is we have with the furniture. And what is the rate of depreciation of furniture? Okay, we have furniture for 10%. Depreciation on furniture is 10%. So on 90,000 straight away by depreciation, how much? 9,000, because 10% on 90,000. So no sale or no purchase we can see. We can just simply close the ledger. Okay, transfer this depreciation to the P&L appropriation account. To depreciation on furniture. I'm writing shortcut, please avoid. Okay, 9,000. Lastly, we are going to prepare okay. So lastly, we are going to prepare from the fixed asset side, plant and machinery account. Okay, 3,60,000 and 3,51,000. So before moving ahead, give me a quick moment to conclude another language. Okay, फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। फर्नीचर पे आपका 10% डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट अवे 90,000 पे 10% 9,000 आता है। डेप्रिसिएशन को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ब्लेजर आपका क्लोज हो जाएगा, कोई सेल और परचेज नहीं है फर्नीचर में। ठीक है, लास्ट हम फिक्स एसेट में हमारा जो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। particulars, okay. So let's transfer the balances of the plant and machinery. We have 3,60,000 and 351. 360 and 351. To balance, brought down 3,60,000 by balance okay. Let's rejoin. So plant and machinery, let's transfer the amount of plant and machinery to balance, brought down plant and machinery 3,60,000 and to balance carried down 3,51,000. Okay, quickly move ahead and let's see the adjustment detail whatever we have with us. Machinery purchased for rupees 40,000 on 1st January. So it's purchased in between the year. Okay, how much? 40,000. And we have a machine having a book value of 10,000 sold in
1st July for rupees 20,000. So let's mark the detail of purchase and sale. Okay, so when you purchase the machinery, what you do? To cash purchase. How much? 40,000. And sale by cash 20,000. But you can see what is happening. Give me a moment. Give me a moment. 10,000 but sold for 20,000. We have a profit now of rupees 10,000. So to adjusted P&L, because we have a profit of 10,000. Hope you are getting that. Okay. So we have a profit. Now let's charge the depreciation. Balancing will take the depreciation is 39,000. And when you cross tally, you will find the same 4,10,000. Okay. So let's transfer your cash sale and cash purchase as a source and application, and depreciation and profit on adjusted P&L account. So source and application, cash sale of plant and machinery. I write the shortcut, please avoid for the purpose of examination. It's my humble request. So for 20,000 we sold it, and purchase of machine. How much we purchase for 40,000? 40,000. Clear? Transfer the depreciation on plant and machinery. I write it shortcut, please avoid for the purpose of examination. 39,000. And by profit on sale of machine or plant machinery. We have a profit on sale of machinery of 10,000. Clear? Let's close this. We closed every item of fixed assets. We left with the long-term investment, and we can see that long-term investment has been increased to 2,20,000. So it's a totally increase of long-term investment. So that means a purchase of investment. So mark it as a application of fund. Purchase of investment 2,10,000. I'm writing shortcut, please avoid. Okay. So asset side over. Give me a quick moment to conclude in other language. प्लांट एंड मशीनरी का आप लेज़र बनाएंगे और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, और एडजस्टमेंट में हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मशीन प्लांट एंड मशीनरी जो है ये एफ पॉइंट में मशीन जो है वो 40,000 की परचेज़ की है, तो आपका एप्लीकेशन हो गया 40,000 का स्ट्रेट अवे 1 जनवरी 2022 में। उसके बाद मशीनरी जो बुक वैल्यू 10,000 की थी उसको 20 में सोल्ड किया है, यानी 10 की बुक वैल्यू को 20 पे सोल्ड किया है, तो 10,000 का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्री लेजर में फॉरवर्ड कर देना है। 10,000 का 20 में सेल हुआ तो कैश सेल कर दिया 20,000। ठीक है, परचेज था 40,000 का, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। ठीक है, और जो डिफरेंस आया आपका डेप्रिसिएशन का 39,000 वो हो गया। आप लेजर को क्लोज कर लेंगे। जो कैश सेल और कैश परचेज है वो सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया आपका। डेप्रीसिएशन आपका एडजस्टेड पीएनएल में जाएगा, और जो प्रॉफिट आया था वो क्रेडिट साइड ऑफ एडजस्टेड पीएनएल में। कोई भी चीज याद नहीं करनी, हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल डिस्कस किया, इसलिए इस बार मैं क्विकली जा रही हूँ ताकि सेशन अननेसेसरी ज्यादा लेंदी नहीं हो। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी लेजर क्लोज कर दिया। इन्वेस्टमेंट हमने देखा था डायरेक्ट बढ़ के 2,10,000 है, तो उसे हम परचेज मानेंगे और एप्लीकेशन ऑफ फंड मान लेंगे। क्लियर? अब क्विकली चलते हैं, हमारे एडजस्टमेंट्स को देख लिया हमने सारे। ठीक है, ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं। डिविडेंड बच रहा है तो डिविडेंड 4 लाख पे अभी हम पे कर देंगे। तो डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो क्या होगा, एक तो आपके एडजस्टेड पीएनएल में जाएगा, दूसरा आपका ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ लाइक योर डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सो 12% ऑन 4 लाख स्ट्रेट अवे यू हैव 48,000 एज अ डेप्रिसिएशन, सॉरी डिविडेंड। सो जस्ट पास टू एडजस्टेड पीएनएल, डिविडेंड पेड 48,000,
and it is also your application na dividend 48,000. Okay, so all adjustment done. Quickly go to the equity share increases from 4 lakh to 6 lakh. That means you gain 2 lakh. So it's an your source. Issue of shares 2 lakh rupees. ओके, सो डिविडेंड जो आपने पे किया, एक तो आपने पे किया तो पीनल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, और दूसरा आपने पे किया आपके जेब से पैसे किया तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में 48,000 स्ट्रेट अवे. ठीक है, इक्विटी शेयर बढ़ गया है 4 से 6 लाख यानी 2 लाख रुपए इशू किए गए हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ गया है. सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000. Okay, it's a source. We have debenture redemption reserve and debentures. So debenture redemption reserve, what we can see is it increases from 1 lakh to 1,10,000. And we have a debenture of 3 lakh to 290. So there is a redemption of debenture by rupees 10,000. And debenture redemption is increases by 10,000. So debenture redemption reserve, I am writing DRR, ठीक है, but please avoid the shortcut by rupees 10,000. It's a reserve, so that will be adjusted to your P&L account, and there is a redemption of debenture. Redemption of debenture, I write shortcut, please avoid that, 10,000. Okay, I don't want to unnecessarily expand this session, that's why I'm just quick hurry up at the end moment. So आपका दो आइटम था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एक रिजर्व है जो एडजस्टेड पेनल में जाएगा. 1 लाख से 1,10,000 यानी 10,000 से रिजर्व बढ़ा है आपका. उसके बाद डिबेंचर जो है आपकी 3 लाख से 2,90,000 हो रहे हैं, तो आपने यानी रिडीम किया है डिबेंचर्स को 10,000 से, तो वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा 10,000 से. नेक्स्ट है आपका सिक्योर्ड लोन जो 2 लाख से 1 लाख रुपए हो गया, यानी घट गया, आपने पेमेंट कर दी है सिक्योर्ड लोन की 1 लाख रुपए से. एप्लीकेशन है सिक्योर्ड लोन्स 1 लाख. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, मी, वी ऑल, we have nothing left adjustment to be deal. So kindly calculate the total of your adjusted P&L account and find the difference. Okay, so we have fund from operation on the credit side rupees 1,76,000 as a difference figure, 86,000, 3 lakh. So it's a credit, that means a source. Fund from operation 1,76,000. $4,66,000 this side. Okay, 4,66,000 this side. Okay, so can you give me a quick moment? अब सारे आइटम आपने ट्रांसफ़र कर लिया, तो आप देख सकते हैं आपका पहले क्लोज करेंगे एडजस्टेड पेनल अकाउंट जिसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 1,76,000 का. उस अब क्रेडिट साइड है तो ये आपके लिए सोर्स ऑफ एप्लीकेशन सोर्स हुआ, सॉरी, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपने सोर्स में ट्रांसफ़र कर लिया 1,76,000. नेट टोटल आ जाएगा 4,66,000 बोथ साइड. ठीक है, तो इतनी सारी वर्किंग हमने दिखा दी. येस, वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो आप इन सेशन से आई होप अ लिटिल बिट
जो भी वैल्यू एडिशन यहाँ है, तो प्लीज़ गिव योर व्यूज सो दैट your if you people are actually getting benefit out of it, I must have a simple right to know that you people are actually getting a benefit from these sessions. To do share in the comment section. And today, because of some little bit of health issues, might my one of any of the words or any numbers you are not clear with, do ask in a comment section that also. Okay, so keep working hard. We'll bring more numerical practice with the different topics of commerce and accountancy. And now is the time to understand about the money. So commerce and accountancy is all about dealing with the money in the right form by managing the human resource, managing your assets and everything, your expenses and everything at come into a conclusion to deal with money. Okay, so for getting money, arranging money and using a proper use of money, you don't need to memorize thing, only you need to understand thing so that you can organize your life strategically. Okay, so stay connected, keep working hard. We'll bring more numerical on the commerce and accountancy, but do share your views, it is very important for me. So take care, till then, bye bye and Jai Hind.